Looking back, moving forward with respect to gender equality. Pakistan is a country with a great deal of diversity in culture, traditions, habits, attitude, and practices across its various provinces and regions. Although there are similarities as well. The role and responsibility of women change as the demographic area change, along with changing local custom and traditions. कि जैसे जैसे जोग्राफिकल एरिया चेंज होता जाता है, लोकल कस्टम चेंज होते जाते हैं, ट्रेडिशन चेंज होते जाते हैं, कल्चर चेंज होता जाता है, वुमेन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको चेंज नज़र आता जाता है। इवन कि आपको पता है कि हर 25 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज में और एक्सेंट में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आना शुरू हो जाता है। When the broad term of gender equality, women right, gender equality used, we looking back toward the history of this term. We can see the word feminism. Here we have a look on feminism. कि feminism क्या है? Mindset about rights. Men, their rights and nothing more. Women, their rights and nothing less. ये एक कहावत थी, एक कोट है सुजैन बी एंथनी की अबाउट फेमिनिज्म, अबाउट जेंडर इक्वालिटी. व्हाट इज फेमिनिज्म? फेमिना वर्ड जिसका मतलब है विमेन, फेमिनिस्ट, feminist movement, feminist work, feminist theory, and Islamic feminism. Feminism, the term from the Latin word femina, जिसका मतलब women है, जिसका मतलब औरत है, उसका femine का मतलब. तो originally meant having the qualities of females. अगर हम लफ्जी तर्जमे पे जाएं तो feminism का मतलब है कि जिसमें फीमेल की क्वालिटीज हों. It begins to be used in reference to the theory of sexual equality and the movement for women's rights, replacing womanism in the 1980s. कि 1980s में इससे पहले जब वुमेन राइट्स की बात होती थी तो उसको वुमेनिज्म का नाम दिया जाता था. उसके बाद ये रिप्लेस होकर इसको फेमिनिज्म का नाम दिया जाने लग गया. फेमिनिज्म इज अ फिलॉसफी इन विच विमेन एंड देयर कंट्रीब्यूशन आर वैल्यूड. इट इज बेस्ड ऑन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इक्वालिटी फॉर ऑल वुमेन एंड फॉर ऑल गर्ल्स. फेमिनिस्ट क्या है? फेमिनिज्म तो ये हो गया जिसमें हम वुमेन को वैल्यू देने की बात कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट पे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, हर एस्पेक्ट पे उसको वैल्यू देने की बात कर रहे हैं. तो फेमिनिस्ट क्या है? कैन बी एनीवन इन द पॉपुलेशन, मेन, वुमेन, गर्ल्स और बॉय. कोई भी फेमिनिस्ट हो सकता है. मेल भी फेमिनिस्ट हो सकता है, फीमेल भी फेमिनिस्ट हो सकती है. वो बंदा जो बात करता है इस चीज की, जो इस कॉन्सेप्ट का फॉलोअर है, जो इस कॉन्सेप्ट का मानने वाला है कि वुमेन की वर्क को वैल्यू देनी चाहिए, उसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं. हु बिलीव इन दैट मेन एंड वुमेन शुड बी इक्वल politically, economically, and socially as defined above. Feminist work is broader than simply a stronger emphasis on women. The goal is to revise our way of considering history, society, literature, etc., so that both male and female are seen equally, conditioned by the gender construction of their culture. Expectations of men are very different from expectation of the sharing of power, organic structure, individual uniqueness, and dislike of hierarchical positioning are the commonly shared viewpoints. Feminist movement.
कि फेमिनिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने देखा, फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन सी फेमिनिस्ट मूवमेंट थी। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट आल्सो नोन एज द वुमेन मूवमेंट और वुमेन्स लिबरेशन is a series of campaigns on the issues such as reproductive rights, including abortion, domestic violence, maternity leave, equal pay, sexual harassment, and sexual violence. The goals of the movement vary from country to country. जिस ममालिक में ज़्यादा ज़रूरत थी जिस चीज़ की, जिस ममालिक में ज़्यादा इश्यूज थे जो, तो उस ममालिक में वो गोल ज़्यादा आगे आए। तो ये सारे जो गोल थे ये वेरी करते रहे कंट्री टू कंट्री। फेमिनिस्ट थ्योरी एम्स टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, focuses on gender, politics, power relation and sexuality, including reproductive rights, violence within a domestic partnership, maternity leave, equal pay, sexual harassment, discrimination and sexual violence. Islamic feminism, full equality of all Muslim regardless of sex or gender in public and private life according to Quran.